Hello students, today we are going to start the chapter of chemistry haloalkane and haloarine, which is most important for the CBSE as well as board examination. So start करते हैं for first chapter. First question of haloalkane and haloarine chapter. So in this video we will discuss all the question related to haloalkane and haloarine chapter. First, haloalkane. Haloalkane. First, we know that in case of a haloalkane and haloarine, that is in case of a haloalkane, there is a linking of alkyl halide R, that is a alkyl group, and X, that is a halogen halide group. Similarly, in case of a haloarine, that is a R is replaced by the ring, that is a benzene ring, and X, that is a haloarine. ठीक है. So major difference यही है दोनों ਦੇ ਵਿੱਚ. So first question देखते हैं. Define the haloalkane. In case of the halogen, it is a halogen derivative. Halogen derivative of alkane are called as a haloalkane. These are also called as a alkyl halide. These are formed by replacing the one hydrogen atom in the alkane by the hydrogen. कि alkane हैगी ਸਾਡੇ ਕੋਲ RH, अगर ਇਹਨੂੰ replace करता जाए एक hydrogen तो ਸਾਡੇ ਨਾਲ की फॉर्मेशन हो जाती है अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज ए हैलो अल्केन भी कह देंगे इनको. ठीक है. सो सेकंड है दैट इज ए डिफाइन पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड व्हेन द same two halogen atom are present on the terminal carbon atom alpha gamma position of the carbon chain, they are called as a polymethylene dihalide. For example, BrCH2CH2Br, that is a trimethylene dibromide. Next, that is a geminal dihalide. If the two halogen atom are present on the same carbon atom, that is called as geminal dihalide कह देने ਆਪਾਂ जिस तरह इतने एक कार्बन है उतना दोनों साइड हालाइड लगे हुए हैं जेम डाइहालाइड कह देने. ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट. इन केस ऑफ डाइपोल मोमेंट द it will dipole moment majorly depend upon their direction and structure. ठीक है. And when we draw the CH2Cl2 among these options, डाइक्लोरोमीथेन हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है. तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ. ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਫਸਟ. ਸੈਕਿੰਡ, ਨੈਕਸਟ that is what is a racemic mixture. It is a equimolar mixture of enantiomer that is a dextro and levo form. ठीक है. that is called as a racemic mixture. ठीक है. next racemization है the process of converting D and L form of an optically active compound into a racemic form DL. D and L is called as a racemization. ठीक है. ਜਦੋਂ D ਤੇ L ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਟੀਕਲ ਐਕਟਿਵ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਰੈਸਮਿਕ ਫਾਰਮ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਐਜ਼ ਏ racemization. ठीक है. next है resolution. the process of separation of a racemic mixture into DL and L form is called a resolution. जो D ਤੇ L ਨੂੰ separate ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੰਨੇ this is called as a resolution. next है specific rotation. the number of degree of rotation observed by 1 gram of a sample, 1 ml of a solution in a tube with a path length 1 decimeter using D light, that is a sodium lamp, 189.3 nanometer wavelength at a specified temperature is called as a specific rotation ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ. ठीक है. next what is a chiral. जो define chiral, an object or a molecule which is non superimposable on its mirror image is called as a chiral. the most common example of chiral is a human hand. कि ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਮਿਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਰਾਈਟ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈਫਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ. ठीक है. दैट इज कॉल्ड एज ए नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, तो उसको कायरल कह देंगे. ठीक है. so next that is a chirality. the molecule which are not superimposable on a mirror image are called as a chiral molecule. the property of non superimposability of structure on its mirror image is called as a chirality कह देंगे. ठीक है. next define optical activity. the property of a substance by virtue of which it rotates the plane polarized light is called as a optical activity. ठीक है. प्रॉपर्टी है सबस्टांस की बाय वर्च्यू विच इट रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट. जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है जो प्लेन पोलर लाइट ਨੂੰ रोटेट ਕਰਦੇ वैदर इन डी फॉर्म और इन एल फॉर्म, मतलब राइट साइड या फिर लैफ्ट साइड है तो उसਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ दैट इज ए ऑप्टिकल एक्टिविटी.
name the reagent used to convert the 1 chloropropane to 1 nitropropane, that is the silver nitrite जो यूज़ करते हैं AgNO2, that is the formation of 1 nitropropane formation हो रही है, ठीक है. Next, name the reagent used to convert the bromomethane to ethane. In case of bromomethane, first we write bromomethane alcoholic KOH, ठीक है. ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ OH ਦੇ ਨਾਲ K ਦੇ ਨਾਲ, that is K ਤੇ Br, ਠੀਕ ਹੈ. OH ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇੱਕ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, KBr ਤੇ ਵਾਟਰ ਆਊਟ, the formation of alkene ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, that is by using the alcoholic KOH reagent ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ. Next है which metal is used in the preparation of Grignard reagent from haloalkanes, that is magnesium is used in the preparation of a Grignard reagent. जिस तरह आप RX Mg Grignard magnesium metal यूज करते हैं, RMgX फॉर्म ਹੁੰਦਾ and RMgX that is a Grignard reagent कहते हैं आप, ठीक है. Next, that is a chlorobenzene react with the sodium in the presence of ether. What is the name of reaction? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਲੋਰੋਬੈਂਜ਼ੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈਲੋਅਰੀਨ ਹੈ, ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ, ਸੋਡੀਅਮ ਮੈਟਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੋਲੀਕੂਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਡਰਾਈ ਈਥਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਈਫਿਨਾਈਲ ਤੇ NaCl ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਐਜ਼ ਏ ਫਟਿਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਅਗਰ ਇਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਕਾਪਰ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਲਮਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਫਰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੇਮਿੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ. Next, that is the iodobenzene react with the copper powder in a seal tube. What is the name of reaction? Again, this is ਜਦੋਂ ਕਿ iodobenzene यूज़ ਕੀਤੀ ਹੈ, iodobenzene ਦੇ molecule copper ਦੀ presence ਵਿੱਚ seal tube and formation of diphenyl, that is called as a Ullmann reaction. This is also naming reaction, ठीक है. Next है chlorobenzene react with methyl chloride in the presence of sodium in anhydrous ether. What is the name of reaction? अगेन क्लोरोबेंजीन सोडियम मेटल एंड मिथाइल क्लोराइड यूज़ करते हैं ਆਪਾਂ, एक R अल्काइल ग्रुप यूज़ करते पे, एक अराइल यूज़ करते पे हैं, तो फॉर्मेशन हो रही है अल्काइल अराइल ग्रुप, दैट इज़ ए टोलुइन, ठीक है. दिस इज कॉल्ड एज ए वुड्स फटिग रिएक्शन, ठीक है. नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन CH3CH2 Br प्लस KOH एक्वस. अगर एक्वस है इट मीनस कि अल्कोहल फॉर्मेशन करेगा, K ਤੇ Br आउट हो जाएंगे ਤੇ ਨਾਲ अल्कोहल ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. CH3CH2 Br plus KCN यूज़ करांगे आप, KBr आउट, CH3CH2 CN, ठीक है जी, फॉर्मेशन हो जाएगी. नेक्स्ट, दैट इज ए कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन CH3CH2 OH plus I2 plus sodium हाइड्रोक्साइड, दैट इज ਇਹਨੂੰ ਹੈਲੋਫਾਰਮ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਈਡੋਫਾਰਮ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ CH3CH2 OH plus 4I2 plus 6 NaOH, that is a formation of CHI3, that is a haloform which is called as a haloform. CHI3, that is a yellow PPT, ठीक है. HCOON सोडियम साल्ट ऑफ एसिड, NaI एंड वाटर दी आउटिंग हो जाती, ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ हैलोफॉर्म हो जाता. दिस इज कॉल्ड एज ए हैलोफॉर्म रिएक्शन भी कह देंगे, ठीक है. नेक्स्ट है व्हाट इज द नेसेसरी, वाई इज इट नेसेसरी टू अवॉइड इवन द ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर ड्यूरिंग द यूज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर हाईली रिएक्टिव एंड रिएक्टिव विद वाटर टू गिव कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है. कि जो भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ਦੇ ਵਿੱਚ RMgX है, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ H ਤੇ OH, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਟਰ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, H ਤੇ OH ਜਦੋਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ MgX ਤੇ OH ਇੱਧਰ ਹੋਣਗੇ, RH ਅਲੱਗ, ਅਲਕੇਨ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਰਿਐਕਸ਼ਨ. Next, use of iodoform, that is it is used in the manufacture of pharmaceuticals. It is used as an antiseptic. Next, use of freons, that is freons are used in the refrigerator and air conditioner which use करते हैं freons, and they have also been used extensively as a propellant for aerosol and foam to spray our deodorant and ਕਲੀਨਰਸ ਜਾਂ हेयर स्प्रे है, इन्हों ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ फ्रेon यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है हाउ विल यू कैरी आउट द कन्वर्जन टोलुइन टू बेंजाइल अल्कोहल. फर्स्ट वी राइट द रिएक्टेंट टर्म, दैट इज ए टोलुइन, बेंजीन रिंग नाल CH3 ग्रुप, ठीक है. इन केस ऑफ बेंजाइल अल्कोहल, दैट इज ए
ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ CH2OH, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਥੇ CH3 ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ Cl ਦੇ ਜਾਂ OH ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਂਜ਼ਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਕਲੋਰੀਨੇਸ਼ਨ, CH3 CH2Cl ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਬੈਂਜ਼ਾਈਲ ਕਲੋਰਾਈਡ, ਅਗੇਨ ਐਕੋਸ QH ਦੇ ਨਾਲ CH2OH, that is a benzyl alcohol formation हो जाएगा। नेक्स्ट है राइट द फुल फॉर्म ऑफ DDT। DDT इज डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन, ठीक है। तो इधर नेक्स्ट देखते हैं हाउ सैंडमीयर रिएक्शन एंड ज़ेटरमैन रिएक्शन। In case of Sandmeyer reaction and Zettermann reaction, both the reactions are similar because reactant and product in both the reaction are same, but the reagent are different. This is the main differentiation between the Zettermann reaction and Sandmeyer reaction. In Sandmeyer reaction, benzene diazonium chloride react with the copper chloride and they form a chlorobenzene, ठीक है, copper chloride HCl. Similarly, copper bromide HBr, that is a bromobenzene, chlorobenzene formation, nitrogen gas evolution cuprous chloride अलग हो जाता है। But in case of Zettermann reaction, benzene diazonium chloride react with the copper powder HCl and they form a chlorobenzene, ठीक है। Again benzene diazonium chloride copper HCl यूज़ किया तो formation chlorobenzene है, copper HBr यूज़ करांगे तो bromobenzene, ठीक है जी। नाइट्रोजन गैस की एवोल्यूशन हो रही है, मतलब Zettermann रिएक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ कॉपर पाउडर यूज़ करते पे हैं तो सैंडमीयर रिएक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ कॉपर क्लोराइड यूज़ करते पे हैं, यही मेन डिफरेंस है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज different enantiomer of butane 2-ol and 2-chlorobutane. In case of butane 2-ol, that is an enantiomer of butane 2-ol, that is a mirror image can be shown as OH अपनी पोजीशन ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ठीक है। CH3 फ्रंट वाला ਤੇ O वाला ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ, CH2 CH3 ਪਿੱਛੇ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਅਗੇਨ H ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਰਹੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਨਸ਼ੂਮਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ ਸ਼ੋ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੂਸਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਗੇਨ CCl ਤੇ H ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਗਰੁੱਪ ਰਾਈਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਗਰੁੱਪ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਦਿਸ ਆਰ ਐਨਸ਼ੂਮਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਆਈਡੋਫੋਮ ਟੈਸਟ, और आइडोफोम की है ऑल द कंपाउंड कंटेनिंग द मिथाइल कीटोन दैट इज CH3COO और मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। CH3COH अगर मिथाइल कार्बोनॉल और सच एज इथाइल अल्कोहल और प्रोपन 2-ol when they treated with halogen and aqueous solution of sodium hydroxide, haloform is formed and this reaction is known as a haloform reaction. If the halogen is used is iodine, yellow PPT of आइडोफॉर्म is formed। जिदा आप पिछे भी रिएक्शन करके आए हैं कि yellow PPT बन जाते हैं आइडोफॉर्म, जिदा इथेनॉल है I2 4I2 + 6 NaOH है तो CHI3 फॉर्मेशन हो रही है, H सोडियम साल्ट ऑफ एसिड है, सोडियम आयोडाइड एंड वाटर अलग हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली जो आप प्रोपेनॉन यूज़ करते पे हैं आइडोफॉर्म अगेन तो फॉर्मेशन CHI3 CH3CO सोडियम साल्ट ऑफ एसिड, सोडियम आयोडाइड एंड वाटर दी एवोल्यूशन हो रही है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज आइडोफॉर्म रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ए DDT is prepared from chlorobenzene, that chemical equation only। DDT ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਲੋਰਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਲੋਰੋਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੇ 2 ਮੋਲੀਕਿਊਲ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕਲੋਰੋਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੇ, ਇੱਕ ਕਲੋਰਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ H ਇੱਥੋਂ ਵਾਟਰ ਦੀ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਧਰੋਂ ਕਾਰਬਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ DDT ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ DDT ਦੀ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਡਾਈ ਕਲੋਰੋ ਡਾਈਫਿਨਾइल ट्राईक्लोरो इथेन, ठीक है। दिस इज़ ए फुल फॉर्म, जिस तरह नाम है ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ बड़े ध्यान ਨਾਲ समझना है, ठीक है। डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन, ठीक है। जिस तरह आप स्ट्रक्चर की गल करते हैं
ठीक है जी। ठीक है, दिस इज ए डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, दिस इज ए DDT। ठीक है, so next is, that is a, give the reaction of chloroform with alcoholic QH। in case of chloroform with QH, that is a, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ Cl ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਰਿਪਲੇਸ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ OH ਦੇ OH ਦੇ ਨਾਲ, OH ਲੱਗੇ OH ਐਂਡ OH, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ 3 OH ਮਤਲਬ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਅਲਕੋਹਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਏ ਅਨਸਟੇਬਲ। ਅਗਰ ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵਾਟਰ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਫਾਰਮਿਕ ਐਸਿਡ ਐਂਡ ਫਰਦਰ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ QH ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਸਾਲਟ ਆਫ ਐਸਿਡ, that is called as the potassium formate formation हो जाएगी। ठीक है जी, this is the reaction। next है, why is the Woods reaction is not suitable for the preparation of odd number of alkanes। क्योंकि Woods reaction ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ that is applicable for the even number of carbon atom। ये Woods reaction that is generally used for making symmetrical alkanes containing even number of carbon atom। for example ब्रोमोइथेन है, ब्रोमोइथेन ਦੇ ਦੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ हैं, सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन, मतलब दो तो दो चो कितने बनते पे हैं, 4 फॉर्मेशन, मतलब 4 कार्बन वाले एटम, दैट इज द ब्यूटेन फॉर्मेशन होंगे पे है, प्लस NaBr अलग हो रहा है साढ़े को। तो जो इस तरह देखने कि इफ वी ट्राई टू मेक द अल्केन विद द ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम इन दिस मेथड, द यील्ड ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट इज वेरी पुअर and the 2 more alkanes are also obtained by the product, and further separation of a desired alkane product is also difficult, so we try to make the propane by Woods reaction, ethane and butane are also formed as a product। ठीक है, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ odd number of carbon atom preparation ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੋਮੋਈਥੇਨ ਤੇ ਬ੍ਰੋਮੋਮੀਥੇਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਦੇ ਪਏ, ਈਥੇਨ, ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਤੇ ਬਿਊਟੇਨ, ਤਿੰਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਬਿਕਮ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੀਲਡ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਆਟਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਓਡ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ, write the 2 environmental effect of dichloromethane and it harms the central nervous system, and it higher level of methylene chloride in air cause dizziness or nausea, and in human direct skin contact with methylene chloride leads to intense burning and mild redness of the skin, and direct contact with the eyes can burn the cornea, तो उन्हें cornea भी burn कर देंगे। ठीक है जी, next है, iodoform gives a precipitate with silver nitrate on heating while chloroform does not। कि ਜਦੋਂ ਵੀ iodoform ਨੂੰ iodoform ਜਿਹੜੇ ਹੈ precipitate ਦੇ ਦਿੰਦਾ silver nitrate ਨਾਲ on heating, while chloroform ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਾਰਬਨ ਆਇਓਡਾਈਡ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕੁਆਇਟ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਕਾਰਬਨ ਕਲੋਰਾਈਡ ਬੌਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 213.4 ਕਿਲੋਜੂਲ ਪਰ ਮੋਲ, ਐਂਡ ਕਾਰਬਨ CCl ਦੀ ਬੌਂਡ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 326.4 kilojule per mole। So therefore when iodoform is heated with AgNO3, Ci bond gets cleaved, क्योंकि साइज ਵੱਡਾ है, bond weak हैगा, इस करके cleave हो ਜਾਂਦਾ, and iodine react with AgNO3 solution to give a precipitate AgI। on the other hand CCl bond does not get cleaved। ठीक है, next है, how will you convert aniline into chlorobenzene। aniline, that is a formula benzene ring NH2 group, and we have to form the chlorobenzene। ठीक है, फर्स्ट वी यूज़ करेंगे HNO, दैट इज नाइट्रस एसिड प्लस HCl, Na2 HCl, दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्शन। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਗਿਬਰਸ ਕਲੋਰਾਈਡ HCl ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵਿੱਚ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਫਾਰਮ ਅ ਕਲੋਰੋਬੈਂਜ਼ੀਨ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਾਈਦਰ ਦਾ ਸੈਂਡਮੀਅਰ ਔਰ ਜ਼ੈਟਮੈਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ CH3CH2Br plus AgCN ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਈਸੋਸਾਇਨਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਥਾਈਲ ਆਈਸੋਸਾਇਨਾਈਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, what is a dehydrohallucination reaction? Give example, the removal of a hydrogen atom and a halogen atom in alkyl halide is known as a dehydrohallucination reaction,
And a dehydrohallucination is a elimination reaction that eliminate or remove a hydrogen halide from the substrate and the reaction is usually associated with the synthesis of alkene ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦਾ elimination ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਲਾਈਡ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਇਥਾਈਲ ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ ਹੈ QH ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ KBr ਦੀ ਆਊਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ OH ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ इथीन की फॉर्मेशन होंगी भी है KBr प्लस वाटर ठीक है। Similar next that is a what is the anti-Markovnikov rule अगर anti-Markovnikov rule AMRF भी कह देने आप now the addition of HBr to unsymmetrical alkene against the Markovnikov rule is called as a this is also called as a peroxide effect or anti-Markovnikov rule. According to this effect, the negative part of unsymmetrical alkene will go to the carbon atom of the double bond of unsymmetrical alkene which where the higher number of a hydrogen atom. The reaction takes place in the presence of a peroxide. ठीक है जिस तरह आप देखते हैं प्रोपर 1 ही ने HBr ਦੇ ਵਿੱਚ H delta positive Br delta negative है in the benzoyl peroxide that is the anti-Markovnikov rule. So Br ਜਿਹੜਾ negative part will go to the carbon atom having the in the unsymmetrical alkene going to the carbon having large number of hydrogen atom ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ end ਵਾਲਾ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ Br ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 1 bromo propane. So this is the product according to anti-Markovnikov rule. This is also called as a peroxide effect ठीक है। So next है that is a long answer type question है maximum write difference between SN1 and SN2 reaction. So first start कर दें SN1 ਤੇ SN2 ਦੇ ਵਿੱਚ so in case of SN1 and SN2 first we define the SN1 that is a substitution nucleophilic unimolecular reaction SN2 substitution nucleophilic bimolecular reaction ठीक है। फॉर एग्जांपल जिस तरह आप देखते हैं कि अल्काइल हैलाइड प्लस न्यूक्लियोफाइल तो फॉर्म है आर न्यूक्लियोफाइल एंड एक्स रिप्लेस हो रही है न्यूक्लियोफाइल के नाल ठीक है आर न्यूक्लियोफाइल द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम इक्वल टू दैट इज ओनली डिपेंडेंट अपॉन द अल्काइल हैलाइड एंड डजंट डिपेंड अपॉन द न्यूक्लियोफाइल KRX power 1. So order is here 1 and this is called as a SN1 unimolecular reaction. So it follows the first order reaction SN2 that is it follow second order reaction ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ अल्काइल हैलाइड ਤੇ न्यूक्लियोफाइल दोनों ਦੇ डिपेंडेंट ਹੁੰਦੀ टर्म्स ठीक है। It involves two step mechanism SN1 SN2 that is a single step mechanism. It involves the formation of carbocation intermediate ਦੋ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਇਨ ਬਣਦਾ ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਐਟ ਇਟ ਇਨਵੋਲਵ ਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ट्रांजिशन स्टेट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ट्रांजिशन स्टेट ਬਣਦੀ ਹੈ। It's a unimolecular and back attack as well as front attack can takes place बैक ਤੇ फ्रंट कोई भी टेक प्लेस हो सकता एंड इट लीड्स टू द रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन तो जिस तरह जितों रिप्लेस होंगी कोई भी चीज़ उस जगह पर नवी अटैच हो जाती दिस इज कॉल्ड एज रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन बट बायोमोलिकुलर रिएक्शन के ओनली अटैक टेक्स प्लेस कहते आप देखते हैं कि वो ओपोजिट साइड तो हो जाता तो इस करके यही कह दें आप दिस इज ए इन्वर्जन इन कन्फिगरेशन ठीक है। नेक्स्ट है द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड दैट इज ए टर्शरी ज़्यादा उसके बाद सेकेंडरी उसके बाद प्राइमरी फिर मिथाइल आ जाता क्योंकि टर्शरी ना उन्नी ज़्यादा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी ठीक है। बट जो दूजी साइड देखा जाए ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड दैट इज SN2 ਦੇ ਵਿੱਚ प्राइमरी सब तो ज़्यादा फिर सेकेंडरी फिर टर्शरी सो रेट ऑफ रिएक्शन K into RX and order 1 and in case of SN2 K into RX and nucleophile ठीक है। राइट डिफरेंस बिटवीन हैलोअल्केन एंड हैलोअरीन इन केस ऑफ हैलोअल्केन दैट इज ऑलरेडी ਆਪਾਂ डिस्कस किया RX है तो बेंजीन रिंग है तो वो हैलोजन ग्रुप लगा हुआ ठीक है। RX दैट इज CX इज sp3 sp3 हैबिटेशन है तो ये की बेंजीन रिंग है इस करके sp2 हैबिटेशन आ जाती एंड रेडली अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन रेडली अंडरगो करते हैं तो आ वाले की करते हैं हैलोअल्केन दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन द हैलोजन एटम इन हैलोअल्केन इज वेरी रिएक्टिव and halogen atom in halorine is less reactive. Haloalkane these are lighter than water.
Haloarine these are heavier than water, water नालों heavy होंगे, and haloalkene these are soluble in water and polar in nature. The haloalkene that is insoluble in water but soluble in organic compound होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन SN1 मैकेनिज्म। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ SN1 ਤੋਂ ਹੀ। SN1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ SN1 that is substitution nucleophilic unimolecular reaction है, ठीक है। it is a nucleophilic substitution reaction where a rate determining step is unimolecular, for example Rx plus nucleophile, formation of R nucleophile plus X अलग हो जाएगा, rate of reaction become equal to K into Rx 1 and order हो जाएगा 1, this is a SN1 reaction, ठीक है। and step wise mechanism इधर करते हैं। first that is the formation of a carbocation, अगर टर्शरी अल्काइलाइड यूज़ करते हैं तो फॉर्मेशन Br ਜਦੋਂ रिलीज ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਇਨ दैट इज अ टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है। दिस इज अ स्लो स्टैप एंड फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकेटाइन। सैकेंड स्टैप है न्यूक्लियोफाइल अटैक है, तो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कार्बन से, ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल होते अटैक कर देगा इजीली, एंड फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल दैट इज अ टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, दिस इज ए फास्ट स्टेप। सो सिंस स्लोएस्ट स्टेप इज अ रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, इस करके रेट बिकम इक्वल टू के इंटू टर्शरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो यदि ऑर्डर की हो जाएगा 1 हो जाएगा, हैंस इट इज़ ए सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। नेक्स्ट दैट इज SN2 मैकेनिज्म। सिमिलरली हुण SN2 करांगे, ठीक है। SN2 ऑलरेडी डिफाइन किया कि जिस तरह SN2 कहते सीगे कि दिस इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर रिएक्शन, जिहदे रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज डिपेंड अपॉन द टू टर्म्स एंड ऑर्डर इज 2, Rx प्लस न्यूक्लियोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ R न्यूक्लियोफाइल प्लस X नेगेटिव, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम इक्वल टू के Rx इंटू न्यूक्लियोफाइल, ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन ऑक्यूपाई इन सिंगल स्टैप एंड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रांजिशन स्टेट। तो ये की दसी कि ट्रांजिशन स्टेट होंगी, जिस तरह देखते हैं न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव आयन, ठीक है, अटैक करता पे कार्बन के उत्ते अल्काइल हैलाइड का, तो जिहदे नाल की है जो लिविंग ग्रुप है वो लीव करना स्टार्ट कर जाता, तो एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन हो जाती है। ट्रांजिशन स्टेट के विच ना तो प्रीवियस बॉन्ड पूरी तरह होंदा, ना ही जो न्यू बॉन्ड है वही पूरी तरह होंदा है। सो लास्ट में साढ़े को लिविंग ग्रुप लीव कर जाता, तो फॉर्मेशन हो जाती है अल्कोहल की, दैट इज ए इथेनॉल। एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन अकरिंग इन ए सिंगल स्टेप थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, एंड इन दिस रिएक्शन द न्यूक्लियोफाइल अटैक the carbon atom 180 degree away from the halogen atom from the back side, this lead to formation of transition state। तो इसे करके आप इनू इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन भी कह दें आप, ठीक है। एंड पार्शली ब्रोकन ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन हो जाती है। सो ये मैकेनिज्म है सिंगल स्टैप के, ठीक है। सो नैक्सट आप रिएक्टिविटी की गल करते हैं। इन केस ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ SN2 मैकेनिज्म, the reactivity of alkyl halide toward the SN2 reaction mechanism has to be found to following the following order, that is a methyl halide, primary, secondary and tertiary, ठीक है। जितने कार्बन घट होंगे इतने अल्काइल हैलाइड उन्ना ईजीली जोड़ा है न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा, तो लिविंग ग्रुप लीक कर पाएगा, इस करके ईजीली ट्रांजिशन स्टेट तो ईजीली प्रोडक्ट जो डिजाइड बन सकणगे, इस करके साढ़े को रिएक्टिविटी आ वाली फॉलो होती है, ठीक है। Since the reaction required the approach of the nucleophile to the carbon bearing the leaving group, this is the methyl halide react with rapidly in SN2 mechanism, SN2 reaction, because there are only the 3 small hydrogen atom and having the less steric hindrance. On the other hand, tertiary alkyl has a least reactive because of the presence of 3 bulky group on carbon, so reactivity is following in the order, ठीक है। methyl bromide है प्राइमरी अल्काइल सेकेंडरी एंड टर्शरी, ठीक है। सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट रिएक्टिविटी ऑफ SN मैकेनिज्म, SN1 दी दैट इज ए मैकेनिज्म की रिएक्टिविटी बिल्कुल ओपोजिट हो जाती है, क्योंकि वो फॉर्मेशन की होंगी मैकेनिज्म के कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, ग्रेटर द कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन एंड ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी, तो वध तो वध कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन स्टेबिलिटी कितने होगी, जो टर्शरी वाले होंगे। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी डिपेंड अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन in the first step, greater the stability of carbocation, greater will be ease of formation of product, hence faster will be the rate of reaction. As we know that tertiary carbocation is more stable, therefore the tertiary alkyl halide will undergo SN reaction very fast. The order of reactivity will be tertiary alkyl halide, secondary and primary, then
methyl halide. ठीक है, नेक्स्ट है वाई ट्रीटमेंट ऑफ अल्काइल halide. अगेन दैट इज a important question आ जाता. Alkyl halide react with AgNO2 and nitro to form a nitroalkane and with KNO2 to form a alkyl nitrite. Now what is the phenomena occur here? In case of alkali metal, so ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ in case of alkyl halide react with KNO2, ਠੀਕ ਹੈ, and AgNO2 ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ. KONO, ठीक है, इस तरह स्टार्ट करेंगे. सिमिलरली AG, ठीक है जी, इस तरह स्ट्रक्चर ड्रा करनी है. जो इस तरह स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो फिर सानू काफ़ी क्वेश्चन जो क्लीयर हो जाएगा. ठीक है, सो ध्यान ना समझना इस क्वेश्चन. Alkali metal nitrite are ionic in compound and have negative charge on one of the oxygen atom. Nucleophile attack through the negatively charged oxygen atom on the alkyl halide mainly gives the alkyl metal nitride. कि ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨਾਈਟਰਾਈਟ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਨਿਕ ਹੈ, ਕੇ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਦੈਟ ਵਿਲ ਅਟੈਕ ਔਨ ਦਾ ਅਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡ ਐਂਡ ਲਿਵਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਲੀਵ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਲਕਾਈਲ ਨਾਈਟਰਾਈਟ ਐਂਡ KX ਦੈਟ ਇਜ਼ ਏ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹੈਲਾਈਡ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟਰਾਈਟ ਇਜ਼ ਏ ਕੋਵਲੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ. ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ, AgONO is a covalent compound and the bond between the AgO is covalent. ठीक है, सिल्वर ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਵਲੈਂਟ ਹੈ. ਅਗਰ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਹੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਹੈ ਦੈਟ ਵਿਲ ਅਟੈਕ ਔਨ ਦਾ ਅਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡ ਐਂਡ ਲਿਵਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਵਿਲ ਲੀਵ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ RNO2 ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾਈਟ੍ਰੋਅਲਕੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ. ਠੀਕ ਹੈ, Ag ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ Ag ਤੇ O ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਧਰ ਕੀ ਹੈ K ਤੇ O ਦਾ ਬੌਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਆਇਨਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕੋਵਲੈਂਟ ਹੈ. ठीक है, यह मेन रीजन है विचकार. नेक्स्ट है अगेन सिमिलर क्वेश्चन. व्हेन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद KCN and AgCN will give the different product. ठीक है, KCN अगेन KCN ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ AgCN ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਜਰਲੀ ਫੰਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ that is their nature of bond. Nature of bond in case of KCN that is a ionic bond and AgCN that is a covalent bond. अगर ionic bond है तो they show different charges, K positive CN negative can break, AgC doesn't break. ठीक है, तो इसे करके डिफरेंट प्रोडक्ट बन जाते हैं. सो देखते हैं आप किस तरह. सो इसी तरह KCN is predominantly ionic in nature, that therefore the both carbon nitrogen are free to donate the electron. So CC bond in relatively stronger than CN bond and attack occur mostly through the carbon atom. ठीक है, इस करके साढ़े कोल की आ जाता है K ਤੇ ਇੱਥੋਂ X ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ RCN ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਲਕਾਈਲ ਸਾਇਨਾਈਡ. ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ AgCN that is a predominantly covalent in nature, ਤਾਂ therefore ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ in this case only nitrogen atom is free to donate the electron pair and the attack mostly occur through the nitrogen atom of the cyanide group and forming alkyl isocyanide. ठीक है, ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵਾਲੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਗੇ, ਲਿਵਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਲੀਵ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ Ag X ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਲਕਾਈਲ ਆਈਸੋਸਾਇਨਾਈਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਅਗੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ. ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ that is the treatment of alkyl chloride with aqueous QH leads to formation of alcohol, but in the presence of alcoholic QH alkenes are major product. Explain. And in case of aqueous देखते हैं ਆਪਾਂ ਅਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ QH aqueous ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ that will formation of alcohol ਹੋ ਜਾਂਦੇ, but in case of alcoholic that will follow a dehydrohallucination reaction, formation of alkene ਹੋ ਜਾਂਦੇ. The major reason behind that is in case of QH aqueous and QH alcoholic that is a basic character, that is a alkoxide ion or hydroxide ion presence. ठीक है, सो अपन रीड कर दें. in QH aqueous, QH is mostly completely ionized to give OH negative ion. These being a strong nucleophile result in the substitution reaction of alkyl chloride and to form alcohol. Moreover, in aqueous solution the OH negative ion is highly hydrated or solvated. The hydration reduces the basic character of OH negative ion and which therefore fails to abstract the hydrogen and to form a beta carbon
ऑफ अल्काइल हैलाइड टू फॉर्म ए अल्कीन, ठीक है। तो अल्कीन नहीं बन पाती है, अल्कोहल बन जाता। बट ऑन द अदर हैंड अल्कोहलिक OH दैट इज ए कंटेन अल्कोक्साइड आयन विच इज स्ट्रॉन्गर बेस and then OH negative ion, so obstruct a molecule of HCl from an halide to form a alkene formation हो जाती है, क्योंकि अल्कोक्साइड बेस ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੋਂਗਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ Cl ਵੀ ਅਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵੀ, ਤਾਂ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਲਕੀਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਫਟਿਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਨੇਮਿੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਫਟਿਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, Friedel-Crafts acylation, Hunsdike reaction and Friedel-Crafts alkylation reaction, ठीक है। First fatigue reaction, in case of fatigue reaction, in this reaction two molecule of haloarine combine with metallic sodium in the presence of anhydrous ether to form a diphenyl। जिस तरह क्लोरोबेंजीन देखने हैं, 9 मोलिकुलर रहने आप सोडियम की प्रेजेंस विच इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो फॉर्मेशन होती पई है डाईफिनाइल, दोनों अल्काइल ग्रुप यूज़ किए हैं, तो इस रिएक्शन को कहते हैं फटीग रिएक्शन। सिमिलरली नेक्स्ट दैट इज a Hunsdike reaction, in this reaction the silver salt of carboxylic acid, silver acetate treated with bromine, ठीक है, Br2 that is in the presence of CCl form reflux that will give a bromomethane, ठीक है। अल्काइल हैलाइड है, CO2 अलग हो जाएगा, AgBr अलग हो जाएगा, तो इसनों Hunsdike रिएक्शन कह देने आप, ठीक है। नैक्सट आ जाता साढ़े को Friedel-Crafts acylation। In case of Friedel-Crafts acylation, that is the benzene ring is treated with acetyl chloride in the presence of anhydrous aluminium chloride। तो आप देखते हैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਅਟੈਚ H ਤੇ AsCl ਇੱਥੋਂ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ CO CH3 ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਐਸੀਟੋਫਿਨੋਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਐਸੀਟਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਐਜ਼ Friedel-Crafts acylation reaction, ठीक है। Next is Friedel-Crafts alkylation. In this reaction, the benzene ring is treated with haloalkane and generally chloroalkane in the presence of anhydrous aluminium chloride and result in the alkyl benzene are formed, ठीक है। तो alkylation ਦੇ ਵਿੱਚ alkyl group attach ਹੋਏਗਾ, benzene ring, methyl chloride ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ anhydrous aluminium chloride, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ acetyl chloride ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ methyl chloride यूज़ ਕੀਤਾ, methyl group ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, that is a toluene formation है, this is called as a alkylation, alkyl group attach हो रहा, ठीक है। that is called as a Friedel-Crafts alkylation reaction, this is also important reaction। Now next is again naming reaction, Ball-Schiemann reaction, sulfonation of haloarine, Sandmeyer reaction or Finkelstein reaction। so first start करें Ball-Schiemann reaction, that is a reaction that is a decomposition of benzene diazonium chloride to the fluorobenzene, ठीक है। so first benzene diazonium chloride that is react with the HbF4, that is the formation of benzene diazonium fluoroborate N2BF4, again salt formation है। next heating ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, fluorobenzene formation ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ N2 plus BF3, this is a fluorobenzene, this is the major product of this reaction। next sulfonation of haloarine, again in this reaction haloarine is treated with concentrated sulfuric acid as a result of orthopara substituted are formed। ਜਦੋਂ ਸਲਫਰਿਕ ਐਸਿਡ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਅਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡ ਨੂੰ, ਸਿਮਿਲਰ ਕਲੋਰੋਬੈਂਜ਼ੀਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਲੋਰੋ ਤੇ ਕਲੋਰੋਬੈਂਜ਼ੀਨ ਕਲੋਰੋ ਦੀ Cl ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਔਰਥੋ ਤੇ ਪੈਰਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਲਫਾਈਡ ਸਲਫੋਨਿਕ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2 ਕਲੋਰੋਬੈਂਜ਼ੀਨ ਸਲਫੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਐਂਡ 4 ਕਲੋਰੋਬੈਂਜ਼ੀਨ ਸਲਫੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। next that is a Sandmeyer reaction, in this reaction the preparation of aryl benzene, that is in this method benzene diazonium chloride is treated with cuprous chloride in the presence of that is a halogen acid to form a halogen haloarine formation हो रही है, ठीक है। that is a chlorobenzene the formation of benzene diazonium chloride in the presence of cuprous chloride HCl, nitrogen gas and HCl waste as outer product, ठीक है। so next करते हैं, that is a Finkelstein reaction। in case of Finkelstein reaction that is a ido product formation हो जाएगी alkyl halide, तो this is a reaction used to prepare the ido alkane। in this method the chlorobenzene is treated with NaI in the presence of acetone to give a ido alkane, जिस तरह RCl है प्लस NaI है, NaCl आउट हो जाएगा तो R ਤੇ I formation ido product हो रही है, ठीक है। so next question ਸਾਡੇ को आ ਜਾਂਦਾ, why aryl halide or haloarine are less reactive than alkyl halide
और हैलो अल्केन। ठीक है, हैलो एरीन ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲੈਸ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੈ ਔਰ ਹੈਲੋ ਅਲਕੇਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਮੇਜਰ 3 ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰ, ਸੈਕੰਡ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡੇਸ਼ਨ, ਥਰਡ polarity of carbon hydrogen halogen bond। ठीक है, first we first resonance effect in alkyl aryl halide, the electron pair on the halogen atom are in conjugation with the pi electron on the of the benzene ring and the following resonating structure। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ benzene ਹੈਲੋ ਅਰੀਨ ਦੀਆਂ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਜਦੋਂ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਪਏ Cl ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਰੈਜ਼ੋਨੇਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ 2 ਨੰਬਰ 3 ਨੰਬਰ 4 ਨੰਬਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ Cl ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ in the aryl halide, the electron pair on the halogen atom are in conjugation with the pi electron of the benzene ring and the following resonating structure are possible। As a result, the resonance there is a delocalization of electron over the entire benzene ring on CCl bond, acquire a partial double bond character। This is also evident from the contribution of structure and third, fourth and fifth। As a result, the bond cleavage in aryl halide is a difficult and less reactive toward the nucleophilic substitution reaction। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 3 ਰੈਜ਼ੋਨੇਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ CCl ਬੌਂਡ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। Next second factor, that is a hybridization। In case of haloalkane, that is a carbon atom in CX bond, that is a sp3 hybridization, while in haloarine carbon atom attached to halogen is sp2 hybridized। The sp2 hybridized carbon atom with a greater s character। ठीक है, sp3 है तो sp2 है। ठीक है, sp2 in the sp2 hybridized carbon atom with a greater s character ज़्यादा होएगा, s character, so more electronegative, ये वाला electronegative ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, it can hold electron pair of a bond more tightly than that of sp3 hybridized carbon atom in alkyl halide। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ sp3 ਹੈ, ਇਹ 'ਚ s ਕਰੈਕਟਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਗਰ s ਕਰੈਕਟਰ ਘੱਟ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, so therefore CX bond of aryl halide is shorter than that of alkyl halide। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਬੌਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਰਟਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਉਹਦੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, नेक्स्ट थर्ड फैक्टर है polarity of a CX, that is a C halogen compound, carbon halogen compound। The sp2 hybridized carbon atom involved in CX bond in haloarine molecule is more electronegative। ठीक है, उन्हें आप कितना then sp3 hybrid carbon atom in alkyl halide, therefore the sp2 hybridized carbon atom has a less tendency to release electron to Cl atom and therefore CCl bond in aryl halide is less polar। ठीक है, in alkyl halide this is spotted that by fact that the dipole moment of chlorobenzene is 1.69 d, while that of dipole moment of chloroethane is 2.05 d। thus the lesser the polarity of a CCl bond, lesser is the reactivity। ठीक है, जिन्नी उन्नी हो जाएगी dipole moment घट हो जाएगी, उन्नी ज़्यादा की है पोलैरिटी भी घट है उसकी, तो सो इसकी रिएक्टिविटी भी की कर जाएगी, घट जाएगी। सो दिस इज़ द मेन फैक्टर विच गिव्स द आंसर ऑफ haloalkane and haloarine reactivity। Next question, that is ethyl chloride is treated with KOH aqueous, that is a formation of alcohol, KCl अलग हो जाएगा तो formation of ethyl alcohol। Similarly KCN ਦੇ ਨਾਲ KCl अलग, cyanide formation, methyl cyanide formation। ठीक है, next reaction of n-butyl chloride is treated with KOH aqueous again। butyl chloride है KOH, KCl out। ठीक है, तो formation डायरेक्ट की बन जाता पिया KOH अगर aqueous होंदा तो फिर तो अल्कोहल बनाएगा, बट इत्थे की अल्कोहलिक है, इट मीनस अल्को ऑक्साइड और की करेगा, हैलोजन भी रिमूव करेगा तो नाल दी कार्बन का हाइड्रोजन भी रिप्लेस करेगा। ठीक है, इस करके फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन हो जाएगी बुट1ईन। नेक्स्ट है क्लोरोबेंजीन है, ट्रीटेड विद मिथाइल क्लोराइड है, अगेन एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, दैट इज ए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एंड दिस इज ए अल्काइल ग्रुप, अल्काइल हैलाइड है।
तो फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन हो जाएगी, ऑर्थो तो पैरा प्रोडक्ट हो जाएंगे, ऑर्थो क्लोरोटोलिन, ठीक है, पैराक्लोरोटोलिन एंड पैरा प्रोडक्ट दैट इज ए मेजर प्रोडक्ट जिथे स्टेरिक हिंडेंस बहुत ज़्यादा कट होएगी, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज वाई आइडोफॉर्म गिव्स एन प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, एंड हाउ डज क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद मैग्नीशियम और Cl2। In case of carbon iodide, Ci bond is quite weaker, 213.4 kilojoule per mole as compared to CCl bond 326.4 kilojoule, and therefore when iodoform is heated with AgNO3, the solution of Ci bond get cleaved easily and iodide ions react with AgNO3 gives the precipitate of AgI. On the other hand, CCl bond does not get cleaved, ठीक है, वो वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀਕ ਬੌਂਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬੌਂਡ ਹੈ ਵੀਕ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕਲੋਰੋਬੈਂਜ਼ੀਨ ਜਦੋਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹਾਲਾਈਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਗਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿਮਿਲਰ, ਇੱਥੇ ਰਿਪਲੇਸ ਆਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਕਲੋਰੋਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਲੋਰੀਨੇਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਔਰਥੋ ਤੇ ਪੈਰਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ 1,2-dichlorobenzene and 1,4-dichlorobenzene, again major product that is a 1,4-dichlorobenzene, ठीक है। नेक्स्ट है अगेन नेमिंग रिएक्शन है, that is a Wurtz reaction and nitration of a halorine. In case of Wurtz reaction, when alkyl halide treated with sodium metal in the presence of dry ether, that is the alkane is formed. For example RX sodium ਦੀ presence ਵਿੱਚ dry ether the formation alkane ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, that is a even number of carbon atom. This is a Wurtz reaction. नेक्स्ट नाइट्रेशन ऑफ हैलोरीन है, जो हैलोरीन है नाइट्रेशन नाइट्रिक एसिड एडिशन करते हैं तो फॉर्मेशन अगेन होती पई है ऑर्थो ते पैरा प्रोडक्ट दी, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, तो इसी तरह पैरा नाइट्रो है तो मेजर प्रोडक्ट दैट इज ए पैरा, ठीक है। हाउ विल यू कन्वर्ट, नेक्स्ट दैट इज ए कन्वर्जन इथाइल ब्रोमाइड टू इथाइल आइसोसाइनाइड। सिमिलर अगर इथाइल ब्रोमाइड डायरैक्ट AgCN विच एडिशन कर दें तो फॉर्मेशन की होंदी पई है, तो वो डायरैक्ट आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन होंदी पई इथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, क्योंकि AgCN दैट इज ए कोवलेंट कंपाउंड हो जाता। नैक्सट आ जाता है साढ़े कोल दैट इज आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड टू द प्रोपीन सॉरी। सो ये आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड में जो QH अल्कोहलिक ना ट्रीट करते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोप 1 इन दैट इज अल्कीन फॉर्मेशन होंदी पई है प्लस KBr प्लस वाटर, ठीक है, क्योंकि QH अल्कोहलिक है अल्कोक्साइड एंड प्रेजेंस, ठीक है। अगेन DDT की प्रेपरेशन है ऑलरेडी आप डिस्कस किया, क्लोरल है 2 क्लोरोबेंजीन यूज़ करा तो इतों वाटर की क्लीवेज हो जाएगी तो बाकी फॉर्मेशन DDT डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन द फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। अगेन नेक्स्ट दैट इज ब्रोमोइथेन टू आइसोइथेन, ब्रोमोइथेन है दैट इज अ फॉर्मेशन विद NaI दैट इज एसीटोन रिफ्लक्स द आइडो अल्कीन बनते पे, दिस इज एग्जांपल ऑफ फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है, जो एक नेमिंग रिएक्शन है वो एग्जांपल है, ठीक है। नैक्सट दैट इज अगेन मेजर रिएक्शन है, ठीक है, इन्होंने कंप्लीट करांगे आप। सो फर्स्ट देखते हैं आप अगेन 1 क्लोरोप्रोपेन है विद सोडियम आयोडाइड है, अगेन फिंकलस्टीन रिएक्शन NaCl आउट हो जाएगा इतों तो आइड इतने आई आ जाएगा Cl की जगह तो 1 आइडोप्रोपेन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज टर्शरी अल्काइल हैलाइड है दैट इज 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन इन प्रेजेंस ऑफ QH दैट इज ए डिहाइड्रोहालोजिनेशन द फॉर्म QH अल्कोहलिक, ठीक है, अल्कोहलिक इथेनॉल अल्कोहलिक है द फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन, अगेन 2 ब्रोमोब्यूटेन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है वार्म और हाइड्रोलिसिस दैट विल फॉर्म ए ब्यूटेन 2 अल्कोहल की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट है ब्रोमो इथेन है प्लस KCN है, KCN दैट इज ए KCN एक आयनिक कंपाउंड है, सो ये फॉर्मेशन डायरैक्ट KBr अलग हो जाएगा तो साइनाइड प्रोडक्ट है प्रोपेन नाइट्राइल आप कह सकते हैं जा। सोडियम फिनॉक्साइड है दैट इज ए क्लोरोइथेन द फॉर्मेशन दैट इज ए विलियमसन सिंथेसिस दी एग्जांपल आ जाती दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ईथर फिन। नेक्स्ट दैट इज ए प्रोपेनॉल with thionyl chloride SOCl2 that is the formation of CH3 CH2 CH2Cl that is a chloropropane formation होती है, सल्फर डाइऑक्साइड अलग एंड HCl गैस अलग हो जाती है। अगेन ब्यूटानिन विद HBr that is a peroxide presence एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो करेगी तो फॉर्मेशन 1 ब्रोमो ब्यूटेन हो रही है। नेक्स्ट अगेन 2 methyl butene with HBr that is a मार्कोनिकोव रूल
addition है, negative part of a halogen acid will go to the carbon atom having the lesser number of हाइड्रोजन, सो फॉर्मेशन हो रही है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन दी, ठीक है जी। सो नेक्स्ट अगेन कन्वर्जन है, फर्स्ट एन ब्यूटाइल क्लोराइड जो ट्रीट करांगे विद QH अल्कोहलिक, अगेन अल्कीन दी फॉर्मेशन हो रही है ब्यूटाइन। सेकंड है 1 ब्रोमोबेंजीन रिएक्ट विद मैग्नीशियम ना, अगेन मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, ग्रिग्नार्ड एजेंट की तरह। नेक्स्ट क्लोरोबेंजीन डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस under normal condition, however it undergo hydrolysis when heated in aqueous sodium phenoxide solution at a temperature 623 Kelvin and pressure 300 atmosphere to form a phenol, ठीक है। क्लोरोबेंजीन तो फिनोल बनाने के लिए कंडीशन सानू आ वाली चाहिए। नेक्स्ट है वैन इथाइल क्लोराइड, थर्ड रिएक्शन की है, इथाइल क्लोरोबेंजीन या इथाइल क्लोराइड with QH aqueous, that is again formation of alcohol ethanol. Next that is a methyl bromide react with the sodium, that is a again this is a reaction of a Wurtz reaction, formation of a alkane. Next when methyl chloride react with the KCN, again cyano product methyl cyanide. So this is the most important question of haloalkane and haloarine chapter. I hope ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਰਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬੁੱਕ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ ਟੂ ਆਲ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। नेक्स्ट भी इसी तरह बाकी चैप्टर की भी वीडियो ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।